what is the selection criteria that you use if you are selecting or submitting किसी बंदे का SOP? So last year I had to take लोगों के interviews GSoC के पहले, जो कि कभी नहीं होता था. So you started contributing in March. So March, after a month of it. Go through your proposal with your mentor so that It seems too simple, but like simple है नहीं. Things happen sometimes, like some companies get dropped without some like controversies या फिर budget issues. मतलब मैंने तो फरवरी में ही किया था स्टार्ट. GSoC चाहता है कि आप और AI वाले प्रोजेक्ट्स को. हाय गाइस, I'm निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं GSoC के बारे में. मैंने 3 लोगों का पॉडकास्ट लिए हैं, इंटरव्यूज लिए हैं, उनके से पूछे हैं काफी सारे क्वेश्चंस, कैसे उन्होंने अप्लाई किया था, कब उन्होंने अप्लाई किया था, क्या उनको चैलेंजेस हुए थे, टेक स्टैक कितना आना चाहिए, एंड बहुत सारी और चीजें भी. सो यू कैन जस्ट वॉच द फुल वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई है विद एवरीथिंग, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना. So, hi Atharva, can you please introduce yourself? Oh yeah, hi Nishan Bhaiya. I'm Atharva Purohit. In my third year, I got the opportunity to work as a GSoC contributor for International Neuroinformatics Coordinating Facility, in short INCF. So for INCF, I worked on an impact visualization dashboard for their project. They wanted to showcase the impact of their open source GSoC projects. So I had to create like a complete dashboard to showcase what projects they have and what impact they are having on the neuroinformatics committee. So basically this project was not developed yet, so I had to create it from scratch itself. Got it. Yeah, and after that, once my contribution was completed, I took the project further through mentorship. So I mentored a contributor for the same project that I worked on, and we took it even further. Nice, amazing. What was the tech stack? कौन से tech stack पे तुमने काम किया था? Before that, before the GSoC, did you like have any idea about the tech stack? पहले experience था या फिर you learned everything on the go? And when you were applying to the like project, what timeline क्या थी? Like कब apply किया था? किस time किया था? So first answering your tech stack question, मैंने फर्स्ट ईयर से ही Django एंड वेब डेवलपमेंट करी थी फर्स्ट ईयर में. तो तब जस्ट ऐसे ही कॉलेज को हमें प्रोजेक्ट्स बनाने थे, तो उसके लिए मैंने फिर Django सीखा था. But since my second year, I started working on machine learning and deep learning. So I kind of developed both of those skills in depth. तो उसकी वजह से मेरा profile was already good enough for I guess open source projects. Okay. So when I was in third year, I decided that I wanted to do GSoC. मतलब ऐसे प्लान नहीं था बहुत ऐसे कि करना ही है, बट जस्ट आई थॉट कि एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज को. सो आई वेंट अहेड एंड लुक थ्रू सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड मतलब वैसे बोलना मुश्किल है कि व्हाई आई चोज INCF specifically, but so basically I got interested into this impact visualization project because they had mentioned that they wanted a Django developer for that who also knew ML, so it kind of fit for me perfectly. Right. So ऐसे नहीं कि I just approached this project's mentor. I actually approached multiple people, but he was the one who responded to me properly, so I was able to maintain a to and fro communication. Got it. He even Got gave it. me some basic tasks and all, so I just gave him the feedback and all. So after that, I just submitted a proposal and I took feedback from him, and then iterative process basically ki you need to improve your proposal according to what the mentor wants. So that also very important that you go through your proposal with your mentor so that same page पे रहे दोनों. तो वैसे फिर just I submitted the proposal, and then yes, after 2 months I got selected. Got it. So what was the timeline like when you started looking out for ये projects? किस टाइम पे अप्लाई किया था? अप्लाई का तो चलो बाद में आएगा, बट शॉर्टलिस्ट कब करना स्टार्ट किया था? When did you reach out to mentors? I believe it was in February, starting of February. It's not late then, basically. For if anyone wants to try now, it's a right time, I would say. Yes. Late नहीं हुआ है. I February think is a good time to start with. हुए projects तो.
हाँ, अभी अनाउंस नहीं हुआ है प्रोजेक्ट्स। हाँ बेसिकली जनरली क्या होता है, काफ़ी लोग पहले से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, करेक्ट यस लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, फॉर द प्रोजेक्ट्स जो लास्ट ईयर आइदर द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोजेक्ट वाज सिलेक्टेड, और दे थिंक कि इफ सम मेंटर इज ऑलरेडी वर्किंग देयर, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू देम, या लास्ट ईयर दे वर नॉट एबल टू गेट इनटू दैट प्रोजेक्ट, दे विल करेक्ट स्टार्ट कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग एंड देन गेट इनटू देयर। सो काफ़ी लोग पहले कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन जनवरी और फरवरी ओनली, यस राइट? नाउ आई थिंक दोनों अप्रोचेस में कुछ गलत नहीं है। मतलब मैंने तो फरवरी में ही किया था स्टार्ट, तो ऐसे कुछ नहीं कि यू आर लेट। बट यस, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया होता है कि वो मतलब पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी गॉट इट। जैसे कि मैं अपने एनसीएफ का ही एग्जांपल दूं तो मैंने मतलब नोटिस किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशंस है। तो कुछ कुछ जो सब ऑर्गेनाइजेशंस है वो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही प्रोजेक्ट को रिपीट करते हैं। राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर तुमको ऑलरेडी पता है, अगर तुम ऑलरेडी मतलब दिसंबर वगैरह से कर रहे हो ये, तो गुड फॉर यू। लाइक तुम, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बेसिकली। हाँ तुम बेसिकली ऑलरेडी जानते हो कि कैसे प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। राइट। एंड मतलब मैंने जितना नोटिस किया, जनरली न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आते, वही प्रोजेक्ट्स को वो इटरेटिवली इम्प्रूव करने की कोशिश राइट। करते हैं। एंड यस, मैंने एक और चीज नोटिस करी है, मतलब कि अभी इवन हमें जीसॉक हर साल मेल करती है कि यू शुड प्रोवाइड योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड ऑल। सो मैंने जनरल ट्रेंड देखा है कि जीसॉक चाहता है कि आप और एआई वाले प्रोजेक्ट्स को लाओ। मतलब वो चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और एआई प्रोजेक्ट्स को बढ़ाए। तो ये हमें मेल में आया था, तो इवन अगर कोई स्टूडेंट एआई कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। Got it. Got it. So you did it in your third year, right? So how did you manage time? Because I think GSoC का पूरा process and सारी चीजें takes around 6 months. Three months का आपका पूरा GSoC वाला time होता है, and 3 months before that. So how did you manage the time? सो जो आई थिंक एप्लीकेशन वाला टाइम है तब तो आई थिंक ज्यादा नहीं होता है प्रॉब्लम, बिकॉज हमारा कॉलेज थोड़ा सा चिल है। जैसे मतलब मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा कॉलेज उतना ज्यादा नहीं तुम पे प्रेशर डालेगा कि कर लो सब कुछ। बट यस, आई वुड से माय थर्ड ईयर का जो वो वाला सेमेस्टर था, इट वाज नॉट गुड। इट वाज सुप्रीमली हेक्टिक क्योंकि आई थिंक हम प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठ रहे थे उसी टाइम पे जीसॉक का प्रिपरेशन चल रहा था। तो या आई थिंक इट्स जस्ट कि आपको करते रहना है। मतलब डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इमीडिएटली, आपको बस करते रहना है। एंड देन आफ्टर दैट जब मेरा हो गया था जीसॉक सिलेक्ट, तो वी हैड अ इंटर्नशिप सेमेस्टर। सो वी कुड बेसिकली जस्ट से कि हमने इंटर्नशिप करी है, तो आवर ग्रेड्स विल बी कन्वर्टेड Right. अकॉर्डिंगली। सो या Right. 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 Got it. If you could go back to your like GSoC journey, what would you have done differently? क्या चीज differently करते for the last 6 months और last year जो आपने की है? सो बेसिकली मेरा जब प्रोजेक्ट आया था, आई थिंक वही वो पॉइंट था जब एलएलएम्स का बूम होना शुरू हुआ था। आई रिमेम्बर मेरा शायद जन या फेब ही था जब चैट जीपीटी आया था Right. फर्स्ट टाइम। बट द थिंग इज, मुझे ऑलमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट 3 मंथ्स का था, तो फर्स्ट मंथ जो था मैं आइडिएट ही कर रहा था उसको, बिकॉज ऐसे कुछ था नहीं। तो सॉरी, Got it. या तो हमारे पास बस को एक बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर था, हमें पता नहीं था इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो Right. मेरा मेंटर और मैं, तो हमारा जो आइडिएशन का टाइम था, तब जस्ट बिकॉज मैंने खुद को उतना अपडेटेड नहीं रखा था एलएलएम्स में, तो मुझे वो आइडिया जल्दी स्ट्राइक नहीं हुआ। बट आफ्टर लाइक अ मंथ, आफ्टर मंथ ऑफ रिसर्च, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करके, वी फाइनली थॉट कि हाँ अभी एलएलएम करते हैं। सो अब पूरा प्रोजेक्ट मैंने एलएलएम के थ्रू किया था। तो आई थिंक वो एक चीज थी कि मैं अगर पहले से ही ज्यादा एलएलएम्स में देखा होता तो शायद वो और बेटर प्रोजेक्ट बनता वैसे। Got it. चलो, nice talking to you. Thank you so much for taking your time. So, hi Samad, can you please introduce yourself एक बार? Nishant, I am Sundar Khan. I am a SD at middleware. इसके पहले I have worked at Samsung for a while. I was an intern there, and I have also done Google Summer of Code.
and I have also been a mentor for the past 2 years. Got it. So यार तेरा पूरा ओवरऑल GSoC का एक्सपीरियंस कैसा था? यार मेरा तो काफी बढ़िया था. I started in college, second year. I started contributing after I had the Samsung offer. So I thought time है. I'll just like do something else in life. DSA के अलावा. So I just went into development. I started doing open source in January of 2022. So that's when I started doing open source, and I found a few people. I found a few orgs, uh, and I tried to like shortlist where I wanted to contribute. मैंने चीजें से देखी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लास्ट ईयर के क्या है, एंड ओवरऑल आई थिंक स्टार्टिंग टू एंड आई लर्न लाइक टू मच थिंग्स फ्रॉम GSoC itself. I have Got met it. great folks, and it's been a very good journey. Got it, got it. So एक तो is it the right time क्योंकि तूने जनवरी में स्टार्ट किया था, currently I think जनवरी एंड होने वाला है इनकी सबको मेंटर्स को अपने I think प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना होगा GSoC के लिए and then GSoC will select मतलब Google will select कौन से प्रोजेक्ट्स will be there in GSoC. So if someone wants to start contributing now, so will he or she might have a chance और अब थोड़ा लेट हो गया क्या सीन है? I think a really perfect time. Like January end is the perfect time to start. Because November December में it's like too much time होता है. So लोग काफी slow कर रहे होते हैं. Jan end से फिर pick up you can like just have things faster in the way. So I think it's a good time to start right now because maybe first PR February first week की थी. Like if I Got it. remember. So it's the time to start. And what do you think is the most rewarding part of GSoC? And the most rewarding part is to learn how to read code. And then you also meet cool people around you जो कुछ अलग कर रहे हैं लोगों से. I think लोगों से मिलना is the best thing that I can say about GSoC. Got it. अब you have been mentor for the GSoC org, ठीक है 2 साल से mentor कर रहे हो. So मेरे को ये बताओ कि यार what is the selection criteria that you use if you are selecting or submitting किसी बंदे का SOP, and what are the criteria that you follow? So yeah, the first thing you would, so there are two things. The first thing is if I know the guy. Like so normally when you do GSoC you talk to the maintainers as well. अगर वो बंदा मुझसे बात कर रहा है normally and if I know him then it might be a bit different. But अगर एक कोई नया बंदा है right and I don't know him, the first thing would be कि जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें क्या पॉइंट्स हैं, लाइक हाउ वुड ही बिल्ड अ प्रोजेक्ट, वो उसमें कितनी डेप्थ है इन दैट डॉक्यूमेंट, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि बंदे ने जो डॉक्यूमेंट किया वो सही भी है कि नहीं है, ऐसे फ्लफ तो नहीं है. सो बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दे आर टू मच फ्लफ बिकॉज नाउ वी हैव जीपीटी, तो बहुत फ्लफ आता है डॉक्यूमेंट्स में. सो अगर डेप्थ नहीं है तो आई वोंट नॉर्मली टेक देम. राइट, उसके अलावा उनकी लास्ट ईयर की पीआर कौन सी है, आई वुड से गिटहब. आई वुड से कि बंदे की कोई पीआर है भी कि नहीं इन द लास्ट 3 मंथ्स, कहीं पर भी, मतलब या तो हमारी ऑर्ग में या कहीं और, या उसने कोई ऐसे बिल्ड किया है कि नहीं किया. दैट्स व्हाट आई वुड सी. लास्ट ईयर कूल थिंग केम वेयर वी कांट टेल कि बंदा रियल है कि नहीं है. तो लास्ट ईयर आई हैड टू टेक लोगों के इंटरव्यूज जी सब के पहले, जो कि कभी नहीं होता था, तो जस्ट नो कि बंदा असली है कि नहीं है. एंड आई हैड टू लाइक टॉक टू मल्टीपल Crazy. पीपल. लास्ट ईयर लाइक 5 लोगों का मैंने राउंड लिया था, जो कि बहुत लाइक नॉन कॉमन था जी सब. Normally think they're async. So I talked to them personally. I just like had a small talk with them कि क्या काम करते हो, क्या build किया है, all that. So if the guy can sort of you know explain कि मतलब उसने क्या build किया है, that would be like a good point. Normally people don't know कि उन्होंने क्या build किया because they just use some sort of thing to build their stuff, copy project AI कर देते हैं. So अगर Makes अगर sense. कुछ भी किया तो I would take them. Got it, got it. So, जो टेक स्टैक में जिस लाइक प्रोजेक्ट which project did you apply for GSoC में और किसके लिए भी mentor हो, and I जो टेक स्टैक था did you like Hmm. have any expertise or did you have any experience on that पहले when you were applying, या फिर साथ साथ ही सीखा कुछ चीजें? So yeah, the tech stack was Meteor.js. When I started contributing and TypeScript, I did not know TypeScript nor Meteor.js. I just knew JavaScript and web development. So अगर core आता है, that would help you to contribute. अगर core भी नहीं आता तो you can't contribute to a project. So I would say if you know how the core web works, you can sort of go into कोई भी project. So like for me, I had no inclination of the stack. I just knew कि web का project है and backend होता है, UI होता है, and हो जाएगा. That's how I sort of approached it and sort of just like learn things on the go. That's what I did. Got it. So yeah, great, yeah, great talking to you. If you have any advice for someone who is like trying to get into GSoC this year, तो क्या रहेगा? I would say keep trying. It's a bit hard and
it seems too simple, but simple hai nahi. It can take a few months to sort of contribute to like a single PR, right? So yeah, I would say uh, just keep trying for a few weeks, and yeah, that's the only thing I can say. How do you effectively like communicate with your mentor? For example, you have been a mentor and you have been a mentee. Dono sides say you have seen the thing. So I think that is the important part of the whole GSoC process, initial before the selection and after the selection as well. So Okay. how do you do that? I would say for communication, you should actually talk to them code लिखने के पहले. Don't talk to them post writing code because that won't have any value. When you start to build something or build a PR, talk to them first कि यार plan ये है and I want to code this out. क्या ये सही है? That's the way to sort of go with it. And the second thing is कि अगर तुम contribute कर रहे हो and you don't know the stack, right? Hmm. So वहाँ पे कुछ point नहीं बात करने का mentor से. You should know something about the project या some tech stack to even talk to them. वरना they won't talk to you. Like Got it, that's the got it. मतलब reality. थोड़ा context तो होना चाहिए for Yeah, you yeah. if you are You, contributing to any project or if you are like trying to get into any project. So you should have basic idea of the stack. जैसे for example, जैसे TypeScript नहीं आती थी, TypeScript का था, but you knew web development basic. yeah, yeah. You could have So figured basics out आने चाहिए. how it works, right? So basics आने Definitely. चाहिए. That is important. कोई core उसमें तुम्हें framework library कुछ नहीं आता, that's fine. You can learn that on the go, but start Definitely. contributing and start understanding how the project works. And the third thing is I think read code. Like code read karna is a very big skill that you should learn in GSoC because no one will help you out in the process. So I just like learn to read code, read commits, go commit by commit to see what changed, read बहुत सारा code in PRs, see how like someone fixed an issue. That's how I think like you should learn from the code base. Like Got that's it. the process. Got it. Chalo. Thank you so much. Thank you so much for having me. So, hi Suraj, how are you? Hi, I'm good, Nishan. So, यार एक तो कौन से organization में you did like your project GSoC में, and did you have any idea before of the tech stack before you applied या फिर on the go you learned? Yeah, so thing is मैं like मैंने INCF के लिए अप्लाई किया था. So it's like basically a neuroscience open like organization, open based organization. So like so वो लोग like usually papers publish करते हैं, they hold conferences, like it's pretty much global. So like मैंने क्या किया था मतलब like basically tech stack. So like initially मैं जो मुझसे like align होता है, something that overlaps completely with mine. एंड लाइक मैं इंटरेस्ट यूजुअली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में रहते थे. सो वो भी देखा मैंने एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया. एंड वन मोर Got it. इम्पोर्टेंट थिंग बीइंग कि लाइक मैं एक और चीज देख रहा था कि whether the organization has a long standing relationship with GSoC. So like Okay. things happen sometimes, like some companies get dropped without some like controversies या फिर budget issues. So इसलिए Right. जो like एकदम consistently like रहे हैं उनके साथ relationship में, so like वो एक ऐसा safe option रहता है कि हाँ इस बार भी like वो pick up होंगे before announcement Got of it. all. Got it. Makes sense. So, when did you start contributing to the project? Next question is that only because I So think if you are saying कि आपने पहले से organization choose कर ली थी, so you yeah, didn't wait for the yeah. actual final list to come. Yep, definitely. Yeah. So like basically I got in touch with Atharva at maybe like around March or something. Okay, so like he was already my connection, but then I noticed that he was already like has been a contributor to the organization that I'm trying to get into. So like उसको मैंने contact करके like March में ही ऐसे बोल दिया था कि मैं interested हूँ, मेरा tech stack align होता है. So like what I did was basically like सब GitHub like repo like clone करके I started just messing around with stuff. थोड़ा like understand किया framework को कि like कितना मैं competent enough हूँ क्या उस पे work करने के लिए. And then फिर छोटे छोटे bugs से start किया. Then फिर उससे permissions लेके like कुछ merge कर दिए. Like actually before selection ही मेरे like 4-5 like merges हो गए थे. So like Got it. that's how I did like kind of maybe Got it. that doing like groundwork would be the best option to go for. Got it. But I think the list जो organizations हैं वो सब announce हो जाती है around February start. Yeah, March, definitely. Yeah. like start. Yep, So you yep. started contributing in March. So March, after a month of it. Yeah, Got it. yep. So for anyone who is starting now, it's not that late. You can Yeah, still definitely. find organizations, and Yep, it's a good time to like apply. Yeah. Got it. So what was the most rewarding part of GSoC for you? Most rewarding part of GSoC would be honestly connections. Because like INCF like so far जितने लोगों ने contribute किया था,
some of them are like pretty talented people. They've like been to places, are up pretty up there in the like all the corporate chains. And then for like there was another mentor other than like Atharva. His name was Arnab Banerjee. So like he's also a pretty like awesome guy. So like basically ऐसे mentors के साथ और फिर even like colleagues के साथ जो like contributors है उनके साथ connect करके like basically बहुत सारे opportunities भी open होता है. Like I wanted to do masters, that's why I came here. But if I wanted to, I would have easily like pretty much landed internships and stuff like that because of all the connections that I gained. Got it. And when you were like contributing to the project, did you face Yeah. any technical challenges, and how did you like solve them? So technical challenges basically like nothing major, but like बहुत सारे times में ऐसे कभी-कभी like security issues हो जाते थे, API access के like keys के थोड़े privacy issues हो जाते थे. So like what I did was mostly like mentors के साथ बात करके like कुछ अगर changes करने हो जो potentially like कुछ security improvements कर सकते हैं या फिर कुछ like leaks वगैरह हो या फिर crashes वगैरह हो, so वो report करना वो like वो एक मतलब schedule period में चलते रहता है. Like it was pretty much cyclic. So वैसे. Got it. So if you have any like advice for someone who is trying to get into GSoC this year, what would that be? Yeah, so that would be pretty much like matlab, so it's not been too late. Like yeah, some people do start like way too early, like maybe December or like November, stuff like that. But like thing is like you one more thing is you can even propose your own idea to the organization if they're like willing to take new proposals. So they clearly state that like unke like sare projects list mein, if like you have an idea that you think might be like inception of something new. So like they will also introduce that. So basically I'm pretty sure Atharva ne wahi kiya tha. He was the one who basically started the project. Like he sent the proposal. So like वो एक option है. And other than that like सबसे पहले तो make sure कि like जो tech stack है वो तुमको like properly आता है, क्योंकि reason being majority of projects are like already like properly made and hosted and are pretty complex to navigate the framework. So like if you're competent enough like उसको host करके देखो आप like मतलब चीजें कर सकते हो क्या उसके, वो सबसे ज्यादा important है. If you like आपने बहुत अच्छा proposal लिख लिया लेकिन then you get to know that you aren't able to like understand stuff, like कुछ तुम like बहुत सारी difficulties आ रही है, then that kind of defeats the purpose of the like GSoC itself. So like वहां पे थोड़े मुश्किल like होते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि मैंने इवन देखा है कि लोग ऐसे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं नेक्स्ट हाफ में, क्योंकि like चीज like things get tough basically. So competency Got is it. the like majority thing. So like basically mess around with stuff before like going all in with it. That's what I like Got recommend. it. So what was the criteria when you were selecting your organization? Number one criteria was that it was a consistent organization and Yeah, it has been like Yeah, getting selected for the past few years. And Yep, yep. what other than this? Other than this would be obviously tech stack. Like कितना if all of my like pretty much like अगर मुझे almost सारे like maybe 70 to 80% technologies already आ रहे हैं, and in the time frame like हमें जो allot करते हैं, there's initially only 1 month period where you can learn stuff. So like अगर आपको like मतलब सिर्फ like maybe 50% के आसपास आते हैं, so like that would be kind of an issue क्योंकि वो learning time frame उतना नहीं है हमारे पास. So इसलिए like make sure कि majority of like जो tech stack है वो आपको already आता है and you can like navigate it in pretty much any framework that you thrown into directly. So वो Got second है, और other than that I don't think और कुछ like ज्यादा important है. Pretty Got much it. मतलब बाकी like majority आना चाहिए. Yeah, It's yeah. not कि you should know 100% of it. If you know Yeah, 50, 60, 70% of it and you can learn and figure out things on the way, you are on the good way. to go. Yep, definitely. Yeah. Good. Chalo, thank you so much. Yeah. Okay. See ya. Bye. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.